Nouns. What you are saying? Uncountable nouns. Put the heading as uncountable nouns. And write, these are nouns that denote D-E-N-O-T-E. These are nouns that denote materials, substances, materials, comma, substances, comma, Material, comma, substances, S-U-B-S-T-A-N-C-E-S, substances, and then comma, ideas, or concepts, C-O-N-C-E-P-T-S, concepts, which cannot be counted. For example, as you have already said, like Rita, name of a person, Rita, comma, India. Okay, India is only one. We can't count India. Kindness, milk, copper, stone, mud. yes, ma'am. Write the abstract nouns like kindness, beauty, memory, joy. These are, write two, three words and etc. लिख दो. चलो. Ma'am, what you are saying, ma'am? Ma'am, your voice is. Uncountable nouns are like India. इंडिया सुनाई दे रहा है कि नहीं? Ma'am, yeah. इंडिया, I-N-D-I-A, India. Ma'am, because ma'am, someone is calling. Ma'am, because in between your voice get mute. Okay, write India. My side. India, comma, milk, comma, kindness, comma, joy, etc. ठीक है? तो these are the words which cannot be counted. अब इसमें एक वो लिख लो, एक इसमें clue लिख लो. These words generally used with a little, much, some, etc. So whenever we use these words, Ma'am, उससे ma'am, these words, these words are generally written with के बाद हाइफन कर दो, हाइफन करके लिखो little, ma'am, one. हाइफन करके लिखो a little करो, a little, comma, few, comma, much, comma, some, etc. So uncountable nouns are written with a little, much, some, few, etc. few भी नहीं, few तो count में आ जाएगा, few नहीं करो, few नहीं लिखो, a little, much, some, etc. समझ में आ गया? Yes, ma'am. आर यू गेटिंग इट? चलो अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा. चलो, वन सेंटेंस राइट. वी हैव बॉट, देखो, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बॉट Ma'am, make 1 minute. many return gifts for my birthday. We have bought many return gifts for my birthday. तो many return gifts are countable है, uncountable है? Ma'am, many. हाँ, many return gifts. Ma'am, uncountable. अनकाउंटेबल क्यों हो गया? मैनी लिखा है, बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट्स खरीदा है, अलग अलग फ्रेंड के लिए अलग अलग खरीदा है, तो मैनी रिटर्न बुक्स.
इट इज काउंटेबल. मैनी रिटर्न बुक्स को अंडरलाइन करो और ब्रैकेट में लिखो काउंटेबल. Ma'am, 1 minute. We have bought many return gifts for my birthday. Underline the phrase, you can say many return gifts और ब्रैकेट में कर लो. At the end of the sentence you write countable. Yes, ma'am. Now write next Ma'am, is sentence. countable. Many return gifts. Many return gifts underline together, then you write countable. Now next sentence. Ma'am, 1 minute. I am hungry, comma, please give me some food. I am hungry, comma, please give me some food. Some food is countable or Ma'am, uncountable? some is uncountable. Huh? Some Ma'am, some food. is uncountable. अनकाउंटेबल. राइट. सम फूड अंडरलाइन करो एक साथ. सम नहीं है, सिर्फ सम फूड एक साथ अंडरलाइन करना है. सम फूड इज अनकाउंटेबल. थोड़ा सा खाना दे दो. अब थोड़ा में गिना नहीं है कि 1 2 देना है, 3 देना है. इट इज अनकाउंटेबल. अंडरस्टैंड? Okay, ma'am. एक सेंटेंस और ले लो. गिव मी ए कप ऑफ टी. गिव मी अ कप ऑफ टी. Give me a cup of tea. Okay, ma'am. हाँ, तो a cup. हाँ, a cup. A cup. What type of Uncountable. countable? Right. Because one Countable. countable. One cup है ना. A cup means क्या हुआ? 1 cup. So it is countable. Next sentence. He is fond of adventure. He is fond of adventure. Yes, ma'am. Have you written? He is fond of adventure. Ma'am, fond. Ma'am, a fond is a. फॉन्ड मीन्स तो वर्ब है. फॉन्ड मीन्स क्या होता है? ही इज फॉन्ड ऑफ एडवेंचर मीन्स उसे एडवेंचर अच्छा लगता है. तो विच वन इज नाउन हियर? Ma'am, adventure. एडवेंचर. ऑब्वियसली एडवेंचर को अंडरलाइन करो. अब एडवेंचर इज विच टाइप ऑफ नाउन? Ma'am, uncountable. अनकाउंटेबल. राइट. तो समझ में आ गया काउंटेबल अनकाउंटेबल. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो. नाउन केस. Ma'am, what? नाउन केस. नाउन CASE केस. Okay, ma'am. ओके, अब इसका डेफिनेशन लिखो. Nouns may be used as the subject Yes, ma'am. or the object. Nouns may be used as the subject or the object of a verb in a sentence. Full stop. It may also be used. It may also be used
to show the position. Full stop. Clear? Have you written it? Okay. Now noun case are also of 4 types. The first one likho. Point A likho. Point A. That is subjective or nominative case. Subjective or nominative case. Same noun. Name is different but the things are same. Subjective or nominative case. Okay, when the noun is the subject of the sentence, then it is subjective or nominative case. Likh lo. When the noun is the subject. When noun is the subject in a sentence, it is called subjective or nominative case. When A noun is the subject when a noun is the subject. Is the subject of a sentence, comma, it is called subjective case. Now give me a sentence in which noun is the subject. Noun से sentence शुरू हुआ है. Subjective case. हाँ जी, subjective case. Now give me a sentence where the sentence begins with a noun. एक sentence बोलो. Boys are playing. इतना सोचने का क्या इसमें? देखो, Yes, ma'am, I also the read boys are playing. लिखो sentence. The boys are playing. Full stop. Ma'am, for example. हाँ, for okay. example लिखो. The boys are playing. Ma'am, the boys is an subjective case. हाँ, the boys को underline करके लिख लो subjective case. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Now take one more sentence. एक और sentence दो. So that it will be clear to you. Give me one more sentence. Rita play with his sister. रीता प्लेज विथ हर. तुम देखो बेटा, ये बार बार गड़बड़ कर रहे हो. इतने दिन हो गए, फिर सेम मिस्टेक यू आर रिपीटिंग. रीता के साथ प्लेज नहीं लिख रहे हो. रीता इज ए गर्ल और वहां आप हिज लगा रहे हो. Also. तो व्हाट विल बी द एक्चुअल राइट सेंटेंस? Ma'am, Rita play with her sister. हाँ, रीता प्लेज विथ हर सिस्टर. यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड. ओके, रीता प्लेज विथ हर सिस्टर. Ma'am, written. रिटन. चल तो रीता क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस. Yes, sir. ओके, नाउ समझ में आ गया सब्जेक्टिव केस किसे बोलते हैं? व्हेन नाउन इज द Yes. सब्जेक्ट. अब नेक्स्ट हेडिंग दो, ऑब्जेक्टिव केस. नेक्स्ट हेडिंग इज ऑब्जेक्टिव केस. Yes, ma'am. अब इसमें लिखो, डेफिनेशन लिखो. व्हेन अ नाउन प्लेज, when a noun plays the role of a direct object. Ma'am, what, ma'am, when a noun Plays the role of a direct object in a sentence. When a noun plays a role of a direct object in a sentence, it is called objective case. ma'am, when a
Ma'am, when a noun plays role of direct object in a sentence, comma, it is called objective case. Full stop. Now, what was your first sentence? पहले वाला जो sentence अभी लिखा था subjective case में, what was your first sentence? when the boys are playing. The boys are playing. यहाँ लिखो the boys are playing football or cricket, whatever you want. लिखो. Write quickly. The boys are playing football or the boys are playing cricket, whichever you want. Now, which is the object? Ma'am, football. Football. The football is objective case. Understand? Yes, ma'am. What was the second sentence earlier? Rita plays with her sister. है ना? Yes, ma'am. इसको सेम सेंटेंस उतार लो. Rita plays with her sister. Ma'am, his sister, her sister, ma'am, her sister. हाँ, only sister. Her sister नहीं. Only sister is the objective case. आ गया समझ में? Yes, ma'am. Okay. When noun plays as a subject, तो subjective case हो गया. जब when noun plays as an object, objective Ma'am, case. subjective case is also known as nominative. Nominative, yes. Okay, now third heading डालो. Third is dative case. D-A-T-I-V-E. Dative case. What is? D-A-T-I-V-E. Dative. Can you say only the ma'am? What is it? Ma'am, can you only say the name? D-A-T-I-V-E. Dative. Dative case. No, ma'am, I'm unable to understand what you are saying. D for dog आता है? D लिखो. Yes, ma'am. A लिखो. A for apple. D A. T for toy लिखो. I for India लिखो. V for van लिखो. E for elephant लिखो. Ma'am, okay, ma'am, okay. Dative Thank you, case. Dative case. Now इसका write the definition. When a noun plays the role of an indirect object. Noun or pronoun दोनों ही होगा. When a noun or pronoun plays the role of an indirect object in a sentence. पहला वाला क्या था? Direct object था. ये वाला क्या हुआ? Indirect object. When a noun or a pronoun plays the role of an indirect object in a sentence, it is called dative case. Okay, ma'am. अब जो तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस था वही वाला बोलो. Yes, ma'am. The boys are playing. The boys are playing football in the park. लिखो. The boys are playing football in the park. So which is indirect object here? Ma'am, I think park. पार्क. राइट. तो पार्क को अंडरलाइन करके लिख दो डेटिव केस. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस बोलो. रीता इज प्लेइंग. Ma'am, Rita plays with her sister at park. नहीं, एट पार्क नहीं करो, चेंज करो इसको. रीता प्लेज विथ हर सिस्टर In her house. in her house. हाँ. Rita plays with her sister in her house. Ma'am, house. House हो गया indirect object, so it is called dative case.
ठीक है, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा. When it is indirect object, then it is dative case. When it is direct object, then it is objective case. आ गया? Now fourth heading डाल दो, fourth and last one. Possessive case. Possessive case. P-O-S-S-E-S-S-I-V-E. Possessive case. वो कहते हैं Possession मतलब क्या होता है? मैं बच्चे Possessive, possession क्या होता है? What is the meaning of it? मैम पॉजिटिव इज मैम इट इज अ पॉजिटिव टाइप. नहीं, पॉजिटिव टाइप नहीं. पॉजिटिव का मतलब है व्हेन वी शो आवर बिलोंगिंगनेस टू समथिंग, मतलब ये हमारा है. लाइक आवर इंडिया, तो हमने शो कर दिया इंडिया हमारा है. मोहित पेन, मोहित का पेन, मोहित एपोस्ट्रोफी फिर एस लिखते हैं, मोहित पेन. तो ये पेन किसका है? मोहित का है. तो इट शोज योर पोजीशन और पॉजिटिवनेस ऑफ मोहित. ठीक है, तो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड पॉजिटिव केस, जिसमें हमें बिलोंगिंगनेस शो होता है. नाउ प्लीज राइट, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन shows possession or ownership, OWNERSHIP, possession, मैम सेज possession. When a noun or pronoun shows, says नहीं, shows possession, ठीक Yes, है, ma'am. लिख लिया. और ओनरशिप, OWNERSHIP, दैट मीन्स ही इज द ओनर. मोहित हाउस, तो इस घर का ओनर कौन है? मोहित है. ओके, ओनरशिप कॉमा बिलोंगिंगनेस भी लिख दो. बिलोंगिंगनेस ये ही बिलोंग्स टू हिज, ही बिलोंग्स टू हिज मदर, उसके मदर का बच्चा है, मदर्स चाइल्ड. तो बिलोंगिंगनेस, BELONGING, बिलोंग लिखो. मैम आई रिटर्न Belongingness लिख लिया. Okay, so then Yes. what it will be? When a noun or pronoun shows possession, comma ownership, comma belongingness, it is said to be the possessive case, or Okay, it is called possessive case. लिख लो. Already written. अब ये वाले सेंटेंस पॉजिटिव नाउन हम शो कैसे करते हैं? एपोस्ट्रोफी के द्वारा. ठीक है, तो अब ये पॉइंट लिख लो, क्लू लिख लो, क्लू लिख लो. अ नाउन इन द पॉजिटिव केस, a possessive case answers the question whose in a sentence. आंसर्स द क्वेश्चन. whose का आंसर मिलता है. लाइक मोहित पेन, whose पेन? मोहित पेन. whose house? मोहित हाउस. ओके, तो when we get the answer of whose, then it is called possessive case. Second point लिख लो. A possessive noun is marked by an apostrophe. A possessive noun is marked by an apostrophe, 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 और ब्रैकेट में apostrophe का साइन लिखो, जैसे कॉमा. मैम द पोजीशन नाउन is marked, MARKED, marked by an apostrophe. लिखो APOSTROPHE, apostrophe. What is apostrophe? ब्रैकेट में apostrophe का साइन बनाओ, जैसे कॉमा फुल स्टॉप होता है ना, कॉमा नीचे करते हैं और जब हम ऊपर की तरफ एक लगाते हैं, ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड apostrophe. मोहित apostrophe S, apostrophe का स्पेलिंग APOSTROPHE. पहले एपोस्ट्रॉफी का साइन बनाओ, नहीं तो भूल जाओगे व्हाट इज एपोस्ट्रॉफी. मैम हाउ इट इज, मैम कैन यू से हाउ इट इज डन.
कैसे करते हैं बेटा? सपोज एक सेंटेंस में हम व्हेन वी राइट अ सेंटेंस और हम एक नाम के बाद हम एक एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो कैसे होता है दैट एपोस्ट्रोफी इज? यस मैम, मैम नेम के ऊपर एक कॉमा लगाते हैं. हाँ, दिस इज ओके मैम. apostrophe. Have you got to understand? Now कैसे लिखोगे? Yes. मोहित, MOHIT, मोहित apostrophe S. So this is Mohit's, or you can say this is Mohit's apostrophe. समझ में आ रहा है? Yes मैम. हाँ, so this is called apostrophe. Okay. Now what you will do? Apostrophe. So it shows with an apostrophe. समझ में आ गया? A possessive noun is marked with an apostrophe. Apostrophe. Full stop कर दो. चलो. अब for example लिखो. For example, मोहित. मोहित's school. MOHIT apostrophe फिर S school. School अलग से लिखो. तो मोहित का स्कूल हो गया. ठीक है. अब सेकेंड सेंटेंस लिखो. चिल्ड्रंस बैग, बच्चों के बैग. CHILDREN, चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी फिर S. चिल्ड्रंस बैग, बच्चों के बैग्स. बैग्स करना है. Ma'am, if there is an apostrophe in a sentence, so ma'am, it is a possessive case. यस, अभी बताते हैं. इतना एग्जाम्पल लग दिया. अब एक सेंटेंस बना. नाउ मेक अ सेंटेंस. दिस इज बॉयज स्कूल. लिख लो. Ma'am, Raju's father have shop at Old Delhi. लिखो. राजू's फादर. राजू एपोस्ट्रोफी S. Raju's father has a shop in Old Delhi. तो राजू's क्या हो गया? पॉजिटिव केस. पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव केस. राइट. नेक्स्ट वन. एक और सेंटेंस बोलो. Yes ma'am. Quickly. Ma'am, Raju's friend get injured in accident. Okay. Raju's friend got injured in an accident. Raju's friend got injured in an accident. Full stop. This is doctor's clinic. ऐसे कर लो. It is doctor's clinic. Doctor apostrophe S. This is doctor's clinic. Okay ma'am. Okay. तो I hope you have understood. तो डॉक्टर्स को अंडरलाइन करो. पॉजिटिव केस लिख लो. Okay. Yes ma'am. And I think I have covered everything. Yes, viewers, if you have any doubt in any topic, do let me know. I will try to teach you more about that topic. Thank you.